Yes, so we are live. 1 second. I will record this. Yes, so we are live on our YouTube channel Health Square and I welcome all of you. दोस्तों मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत दहिरे है और मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रशांत दहिरे एंड आई एम प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड आई एम गोइंग लाइव फ्रॉम अंबाजोगाई महाराष्ट्र। And dosto, today we have very special guest, two guests, and one guest is our regular guest, Dr. Rajesh Jain sir. Welcome, Dr. Rajesh Jain sir. He is a very he is a very senior diabetologist, and all of you are aware of him, Dr. Rajesh Jain sir. And second guest is Dr. Tahira from Iran. So I will introduce her. Welcome, Dr. Tahira. Thank you. Yes. So दोस्तों आज 30th नवंबर, आज 30 नवंबर है। आज इस मंथ का आखिरी दिन है और आज जो लाइव हम करने जा रहे हैं, टुडे वट एवर लाइव दैट वी आर गोइंग टू डू is on the behalf of World Diabetes Day 2022. It is celebrated on 14th of November every year, but whole month we can consider it as a diabetes month, and we can conduct awareness program regarding diabetes, and it is very essential to give right information to all people, those who are living with diabetes, pre-diabetes, and all general population, as our India is going to become the capital, diabetes capital of the world. And that's why we have two special guests to talk on this theme. इस साल की जो थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे की, वो थीम है डायबिटीज एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। हमें एक ऐसे एजुकेशन की जरूरत है जिसकी वजह से हमारा जो कल है वो प्रोटेक्ट हो सके, और इसके लिए ये 1 second. So please don't share, participants. I request you, please don't share your screen. Okay, so I will disable participants screen sharing. 1 second. हम बात कर रहे थे डायबिटीज की और वर्ल्ड डायबिटीज डे की, और उसका जो थीम है वो है डायबिटीज एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। और इस विषय पर हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट है, और पहली जो गेस्ट स्पीकर है उनका नाम है डॉक्टर ताहिरा मोहम्मदाबी, एंड शी इज प्रोफेसर at Faculty of Animal Science and Food Technology, and she is scientist, agricultural ये जो इंस्टीट्यूट है उनका, this is the Agricultural Sciences and Natural Resources University of Iran. She had done her BSc, MSc as well as PhD, and she worked specifically on diabetes, and in diabetes specifically effect of कैमल मिल्क ऑन डायबिटीज। कैमल का जो मिल्क है उसका डायबिटीज के ऊपर कैसे असर होता है,
उसके ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर तेहरा काम करती है। और वो हमारे जो सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट है डॉक्टर राजेश जैन सर, उनकी खास फ्रेंड है। और वो आज हमारे इस खास जूम सेशन पर वो मौजूद है। उसके उनके लिए खास खास सबकी तरफ से हार्टली हार्टली वेलकम प्रोफेसर तायरा। I only understand this your word. Just I understand you said welcome. Thank you. I'm really happy to join you in this event, and I hope it be a very good program. Thank you. या तो दोस्तों, हमारे जो डायबिटोलॉजिस्ट है डॉक्टर राजेश जैन सर, उनको मैं गुजारिश करता हूं कि आज का जो टॉपिक है, और द टुडेज टॉपिक इज डायबिटीज एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थीम, वो हमें कृपया बताएं डॉक्टर राजेश जैन सर। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। और डॉक्टर प्रशांत की तरफ से और डॉक्टर तायरा की तरफ से, मेरी तरफ से मैं सब आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। और जैसा कि इस बार का थीम वर्ल्ड डायबिटीज डे का, ये एजुकेशन से हम अपने फ्यूचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एजुकेशन का क्या रोल है हमारा डायबिटीज के प्रोटेक्शन में। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम सही एक ठीक तरीके से एजुकेट होंगे डायबिटीज के प्रति, तो हम 80 to 90% जो है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल खुद ही कर सकते हैं। ओके, हमें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर की जरूरत हम कम कर सकते हैं अपने। ओके, तो हमें एक तो सबसे पहली बात है कि एजुकेशन की कमी है हमारे देश में। डायबिटीज के प्रति इतना अवेयरनेस नहीं है। ओके, यही कारण है कि 2 में से 1 आदमी को नहीं पता कि उनको डायबिटीज है। ओके, और वो स्क्रीनिंग नहीं होती, बिकॉज की स्क्रीनिंग, हम सब डायबिटीज, सब लोगों की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम डायबिटीज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। और जब भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, मास स्क्रीनिंग करते हैं, तो कुछ लोगों को डायबिटीज उसमें मिल जाती। तो एजुकेशन, ये एक आइडिया फॉर WHO का 3 साल का मोटो है कि वो वर्ल्ड डायबिटीज डे पर एजुकेशन पे जोर देगा। और सिर्फ एजुकेशन पे ही जोर नहीं देगा, असेस टू केयर पे भी ध्यान देगा कि हम अपने डायबिटीज पेशेंट्स को किस लेवल का केयर कर रहे हैं, है ना। हम उनको जो लेटेस्ट मेडिसिन है वो अवेलेबल है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या नहीं। ओके, सरकारी सिस्टम के थ्रू हम उस पर भी काम करना चाहते हैं। फिर डाइट, लाइफस्टाइल, वॉकिंग। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन्स को डायबिटीज ना हो, वो उससे बची रह सके। और जिनको डायबिटीज हो चुकी है, वो उसको अच्छी लाइफस्टाइल से, अच्छी डाइट से और मेडिकल ट्रीटमेंट से वो उसको कंट्रोल कर सके, जिससे कि उनको उसके कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। तो इसमें बहुत सारी चीजों का रोल है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम अपने कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एजुकेट करें। ओके, उनके यहाँ प्रोग्राम्स करें कि कैसे उनको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कि आने वाली टाइम में हमारा जो प्रेवलेंस है डायबिटीज का, वो 8.6 है। तो कहने का मतलब ये है कि हर 10 में से 1 लोगों को डायबिटीज है। ओके, इसके कारण जो हमारा 15 से 20% जो खर्चा है पूरे मेडिकल जो ट्रीटमेंट का है, वो डायबिटीज पे जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। तो हम एजुकेशन के थ्रू कैसे इसको रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा बेसिकली थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे का। जी डॉक्टर प्रशांत।
Yeah, thank you, sir. Thank you for enlightening us on World Diabetes Day. सो दोस्तों, आज हमारे साथ इस डायबिटीज के विषय पर चर्चा करने के लिए खास और एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है प्रोफेसर ताहिरा। एंड टुडे शी ज्वाइंड फ्रॉम ईरान। ईरान से अभी वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। शी ज्वाइंड फ्रॉम ईरान एंड शी वर्क्स on diabetes and camel milk. So I would like to ask Professor Tahira. So first of all, tell us about yourself, what you do in Iran, and what is your passion, Professor Tahira. Are you able to hear me? Yes, yes. Please can say again, because my mobile is just calling. I don't know how to manage this program with my mobile. So please ask again. Yes. We would like to know about you. So what you do in Iran and specifically your background, your passion, we would like to know in your words. Thank you. I'm thankful. First of all, I am thankful to you. You hear me? Yes. For inviting me to share my knowledge about camel milk with you and your audience. Actually, since my specialty is animal science, animal product and food technology, and since 5 or 6 years before I started, I concentrated on using camel milk and its effect on health complications. During this journey, I saw many studies and researches on camel milk and diabetes. So it really, I interested in this topic and started since 5 or 6 years before. I can say we should see camel milk as not a general milk. It's really a medicine, and I don't want to say it treat or it cure, and I just say it's adjunctive treatment for all health complications like diabetes, autism, hepatitis, viral issues. I started some trials, clinical trials on using camel milk for diabetic cases since last year, but until now we didn't publish. It's our problem is in this work is some of these patients really they don't believe, and when you say this camel milk can be helpful for your diabetes, really they don't believe. And I explained, it was very difficult to convince these people to use camel milk for their diabetes. That's why I think it's very it's not easy, but not in trials. Actually, during this time I have many experience about those people who I recommended to use camel milk for diabetic people. And it was very good when I heard from them their feedback, the positive feedback of these people, diabetic people, when they felt better by using camel milk. Scientifically, camel milk is not only milk, it contains insulin-like protein,
about 50 unit insulin per liter. I don't want to say only camel milk has insulin. No, the other milks also, they have insulin like protein, but camel milk is special because this insulin-like protein in camel milk not destroy in the stomach, and it transfer insulin to circulatory system, so it will be helpful for these patients, diabetic patients. I want to say, really, in this work, in this research field that I started, I have many problems because I cannot explain for people how a milk can be helpful for diabetes. Even some of them, they are educated. Even my colleagues, when I had many presentation here and also international presentation in conference, seminar, workshop, everywhere. But I think people need more knowledge about camel milk. But usually, I want to ask you, in India, really, it's people, they know about camel milk. How much they know? I think they don't know. Maybe some people they know. So the big issue is awareing people about camel milk. And about camel milk, I can say the most researches and clinical studies are on anti-diabetic property of camel milk. And I think if audience have some questions about camel milk, I can explain more, because now I don't know. I have many things to tell you about camel milk and diabetes, but I don't know how to start, because the many things in my mind about camel milk and diabetes. If you specify the question, it will be better. And really, I'm happy. Tonight I joined to this program. I think most of these people are Indian, and don't know, if you ask question, it's better, I can explain better. Yeah. Thank you, Tehra. So definitely we will ask few questions from audience. We will take few questions from audience, but before taking questions, I would like to tell them what you in local language. I would like to tell them what you just said. So I will just translate in. Okay. I will just translate in short summary whatever you told. सो दोस्तों, प्रोफेसर डॉक्टर तेहरा जो है वो ईरान में स्पेसिफिकली कैमल का जो मिल्क है और डायबिटीज, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रही है, और पिछले 5-6 सालों से वो इस रिसर्च में इन्वॉल्व है, और लास्ट 1 ईयर से उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स भी चालू किया है कैमल मिल्क, इफेक्ट ऑफ कैमल मिल्क ऑन डायबिटीज. She not yet published any research paper. अभी तक रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया है, लेकिन lots of now results उनके पास अभी भी आ चुके हैं, मौजूद है. तो in nutshell, she is saying that camel milk is not a replacement treatment. कैमल मिल्क जो है यह एक रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट की तरह हम नहीं यूज कर रहे हैं. So this is just an adjuvant therapy, whatever allopathic treatment that we are giving. हम जो भी डॉक्टर की सलाह से जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम लेते हैं, उसके साथ साथ हम ये ले सकते हैं. दूसरा जो है, why we are discussing camel milk? Because this is also one of the interesting question that you will ask, but I would like Dr. Rajesh Jain sir, after I finish my translation, why we are discussing camel milk and diabetes, that Dr. Rajesh Jain sir will tell you. वो आपको बताएंगे कि हम क्यों कैमल मिल्क और डायबिटीज की बात कर रहे हैं. तीसरी बात उन्होंने बताई है कि ये जो है कैमल मिल्क जो है
वो नॉट ओनली डायबिटीज बट सर्टन वायरसेस, सर्टन वायरल डिसीजेस के खिलाफ भी बहुत अच्छा काम करता है, सर्टन इम्यून डिसीजेस के खिलाफ भी काम करता है। और इसमें ऐसा क्या खास है, तो उनका रिसर्च ये कहता है कि इस कैमल मिल्क में एक इंसुलिन लाइक स्पेशल प्रोटीन रहता है। इंसुलिन के जैसा हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज जो ग्रंथि है जो स्टमक के नीचे रहती है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, और इस कैमल मिल्क में उसी इंसुलिन जैसा एक प्रोटीन रहता है। और इसकी खासियत यह है इस प्रोटीन की कि वो जब हम कैमल मिल्क हम लेते हैं तो हमारे पेट में वो इंसुलिन जो है, इंसुलिन लाइक प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, और उसकी वजह से वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और वो ब्लड में चले जाने की वजह से हमारा ब्लड शुगर कम करता है। सो दिस इज लिटिल बिट स्मॉल हाउ इट इज वर्किंग, but she is saying that she had a very good and deep knowledge regarding all these effect of camel milk and diabetes, but she would like to answer your questions। आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको वो आंसर करना पसंद करेगी। तो आपके मन में जो भी प्रश्न है रिगार्डिंग एडजुवेंट थेरेपी एंड डायबिटीज, regarding camel milk and diabetes, regarding other herbal medications, other herbal supplements and diabetes, because she is expert not only in camel milk but she is expert in other herbal supplements also। डायबिटीज में जो कैमल मिल्क तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अदर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी इफेक्ट डायबिटीज पे कैसे होता है उसकी भी वो एक्सपर्ट है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न है यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट बॉक्स में आप कृपया लिख कर भेजिए ताकि मैं वो क्वेश्चन उनके पास अंग्रेजी में बता दूंगा। तब तक हम डॉक्टर राजेश जैन सर के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि हम कैमल मिल्क व्हाई वी आर डिस्कसिंग टुडे। यस डॉक्टर राजेश जैन सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर प्रशांत आपका, कि हम कैमल मिल्क को यहाँ क्यों लेके आए हैं आज, और कैमल मिल्क का क्या योगदान हो सकता है आने वाले टाइम में डायबिटीज को प्रिवेंट करने में और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर तायरा ने जो पिछले 5 से 6 साल से कैमल मिल्क पे वो काम कर रही हैं, उनके कई पेपर पब्लिश हुए हैं इसमें, और उन्होंने कोविड-19 पे भी पेपर पब्लिश किया है कि कैमल मिल्क जो है कोविड-19 को भी कंट्रोल कर सकता है या उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक बात ये आती है कि कैमल मिल्क जो है वो एक पाउडर के फॉर्म में भी आता है। तो आप देखेंगे मार्केट में, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे वहां पर कैमल नहीं मिलेंगे आपको। तो आपका क्वेश्चन ये होगा नेक्स्ट कि यदि हमारे यहाँ कैमल ही नहीं है तो हम कैमल मिल्क कैसे लेंगे। ओके, तो कैमल मिल्क के पाउडर भी इंडिया में अवेलेबल है, और हम जैसा जानते हैं राजस्थान में बहुत कैमल्स होते हैं और कैमल मिल्क इजिली अवेलेबल है। तो एक तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कैमल मिल्क है, जैसा डॉक्टर तायरा ने ऑलरेडी कहा है कि 1 लीटर कैमल मिल्क में 40 से 50 यूनिट इंसुलिन लाइक प्रोटीन होता है। ओके, तो ये इंसुलिन लाइक प्रोटीन बेसिकली क्या है कि हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये बहुत सारे पेपर, डॉक्टर अग्रवाल के पेपर हैं राजस्थान से, बहुत सारे पब्लिश हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि कैमल मिल्क जो है डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए और डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए भी एज ए फूड सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। ओके, तो एक तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसका जो प्रोटीन है, इंसुलिन लाइक प्रोटीन है, वो हमारे पेट में डिस्ट्रॉय नहीं होता, और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके इंसुलिन की तरह काम करता है। ओके, हमारे ब्लड शुगर को कम करता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि कैमल मिल्क को हम ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, और ये पाया गया है कि जहां पर कैमल मिल्क पिया जाता है वहां डायबिटीज का प्रेवलेंस भी बहुत कम। ओके, जैसे कि ईरान है, कई कंट्रीज हैं जहां पर कैमल है, और कैमल मिल्क का रोल डायबिटीज प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज कि कैमल मिल्क में एक लैक्टोफेरिन करके एक प्रोटीन होता है जो कई वायरसेस से हमें बचाता है।
तो कई वायरसेस हैं जो हमारे शरीर में, जैसे कि डॉक्टर तायरा ने कहा, हेपेटाइटिस के जो वायरसेस हैं, लीवर के लिए भी जो है कैमल मिल्क का बहुत योगदान है। तो डायबिटीज में तो इसका योगदान है ही, लेकिन एज ए ये सुपर फूड भी है। ओके, तो कहने का मतलब है कि डायबिटीज के अलावा इसके जो हार्ट पे इफेक्ट हैं, ओके, ब्रेन पे इफेक्ट हैं, लीवर पे इफेक्ट हैं, वो बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो कैमल मिल्क को एज ए हम फूड भी ले सकते हैं, एक फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे आपने देखा कि बहुत लोग हैं मिल्क पाउडर लेते हैं, ओके, डिफरेंट तरह के पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही हम कैमल मिल्क का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ओके, अपनी डाइट में। ओके, गर्म पानी करके उसमें 3-4 चम्मच हम कैमल मिल्क का पाउडर मिला के उसको भी हम ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो कैमल मिल्क को हम अपनी एज ए फूड सप्लीमेंट, ओके, इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम अदर हर्बल मेडिकेशंस डॉक्टर प्रशांत के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली उनका रोल डायबिटीज को कम करने में है। जी डॉक्टर प्रशांत। या थैंक यू सर। जो डेफिनेटली आज हम जो बात कर रहे हैं कैमल मिल्क, वो आज बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सबके लिए साबित होने जाएगी। लेकिन उसके लिए आपके मन में क्या क्वेश्चंस है, वो आपके तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा को क्वेश्चंस आने बहुत ज़रूरी है। तो वन वन पार्टिसिपेंट इज देयर हु वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू Tahira. So I think please unmute yourself. Someone messaged me. I think Unmesh Patil sir, do you like to ask some question? Yes, sir. I would like to ask some questions. Can I ask? Yes. You proceed. Tahira ji, good evening from Unmesh Patil. I want to ask you about camel milk, as I also have some. I also have gone through some research papers. In that research paper, it was established that animal protein can cause inflammation in our body, and the growth factors in milk, like in cow milk also there are growth factors like IGF-1, IGF-2, and these insulin like growth factors, already we are generating more insulin. That's why our body is getting insulin resistance, and then again we are giving our body insulin like growth factors from milk. So I am confused if it will work or not. So this is my question. Hope you understood. Yes. Great question, Unmesh ji. So definitely Professor Tahira is the correct person who who will answer to your question. Yes. Again, you would like to add something? Yes, sir. Actually, my fasting insulin is very high. I am producing more insulin. That's why I am gaining my weight, and I am my HS CPR is also on higher side because of this. Inflammation is also on a higher side. And my one doctor is saying that you should drink milk, and one is saying that you should not drink milk because it will harm you. So people like me, I am a common person. I am not a doctor. I am not a research fellow in health or in this year. So I have a question that exactly what I have to do. Right. So what should be followed, that Dr. Rajesh Jain sir will tell you. But before that, we will ask Professor Tahira to answer your question, whatever doubts that you raised regarding camel milk. Yes, Professor Tahira. Yes, thank you. I understood about what you asked, but really now I don't know what you want to know.
You want to know you can take camel milk or other milks, or you want to know why by taking camel milk maybe your insulin will be increased more. Which of them you want to know? I think about camel milk or other dairy products, especially milks, it's a natural food, and also regarding to camel milk, we call it superfood. And actually we don't have this problem. Scientifically, what will happen in your body, I think, in your cells regarding to this excess insulin when enter to your cells, I think Dr. Rajesh will explain better. But I can say there is not any negative effect on taking camel milk for diabetic patients. If you are diabetic, I don't know, or if you are your insulin is high. I didn't understand these things very well when you explain, but by taking milk or camel milk, you not face to any problem. You know, when I say camel milk has insulin, it not means it's between 30 to 50 units per liter. And how much liter we can take one in daily? Maybe 20, maybe 250. And it gives, how much insulin it gives us? Maybe 10 units insulin. It's not much. That's why it's not harmful on your health, especially about cow milk. You said, some doctor, they said you don't take cow milk. Cow milk has 16 units insulin per liter. So it means when you take cow milk or buffalo milk and the other milks, except camel milk, because camel milk has the highest insulin-like protein. So regarding to my knowledge, I say you don't face any problem by using milk, livestock milk and the camel milk, because its insulin is not much. So I think if Dr. Rajesh explain more, it will be better. Thank you. Thank you, Dr. Taira. Yeah, I think this is clearly explained very well कि जो जितने भी मिल्क हैं बेसिकली, जैसे काउ मिल्क लें हम, बेफेलो मिल्क लें और कैमल मिल्क लें, तो उसमें इंसुलिन लाइक प्रोटीन है, वो इंसुलिन नहीं है। ओके, वो हमारा जो शरीर है और या जो हम आउटसाइड से चीजें लेते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ओके, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इंसुलिन लाइक काम करता है, लेकिन इंसुलिन वो नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैमल मिल्क में हाईएस्ट इंसुलिन लाइक प्रोटीन। यदि हम कैमल मिल्क या काउ मिल्क लेते हैं तो काउ मिल्क में भी इंसुलिन लाइक प्रोटीन है, लेकिन वो कम अमाउंट है, 1 लीटर में 16 है। ओके, और इसमें 1 लीटर में 50 यूनिट है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम 200 ml भी कैमल मिल्क लेते हैं तो उसमें 10 यूनिट जो है इंसुलिन लाइक प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। ओके, और वो इंसुलिन को निकलने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन था वो हाइपर इंसुलिनीमिया पे था। ओके, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा शरीर जब ज्यादा इंसुलिन निकालने लगता है तो वो हमारे शरीर के लिए डेंजरस हो जाता है, उसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। तो ये कंडीशन डायबिटिक पेशेंट्स में होती है क्योंकि हमारे शरीर से इंसुलिन प्रॉपर नहीं निकल रही होती है ना। तो हमें हमारा शरीर जब ब्लड शुगर 200, 250, 400 बढ़ जाता है तो वो बहुत ज्यादा इंसुलिन निकालेगा उसको कम करने के लिए। तो उस कंडीशन को हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं।
और उसी से हमें ओबेसिटी होती है, विसरल फैट डिपॉजिट होता है। ओके, तो यदि फास्टिंग इंसुलिन लेवल हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, और उस रेसिस्टेंस के कारण हमारे शरीर को बहुत ज्यादा इंसुलिन निकालना पड़ रहा है। ओके, तो डायबिटीज में कभी भी हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा यदि इंसुलिन निकलेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ओके, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो इसलिए हम उसको इंसुलिन लेवल को अपना कम करना चाहते हैं। ओके, तो कैमल मिल्क क्या करता है कि वो क्योंकि इंसुलिन लाइक प्रोटीन निकाल रहा है, तो वो हमारे नेचुरल जो इंसुलिन लेवल है, जो हाइपर इंसुलिनीमिया है, उसको कम कर देता है। ओके, तो इट्स नॉट ए रिप्लेसमेंट, इट इज जस्ट ए सब्स्टिट्यूट, कि वो उस तरह का काम कर रहा है। ओके, तो इसलिए कैमल मिल्क को यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हमारे डायबिटीज को बेसिकली वो लेवल जो है ब्लड शुगर का वो कम रखता है, और उसका फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी हमारा कम आ जाता है। तो जो बॉडी का इनबॉर्न इंसुलिन लेवल है वो नेचुरल ढंग से हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत वाइडली नेचर में भी पब्लिश पेपर्स हैं काफी, जो कैमल मिल्क पे हैं, और वो डायबिटीज को प्रिवेंशन करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एक इनका सेकंड क्वेश्चन उमेश जी का था कि हमें एनिमल प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक थ्योरी ये कहती है कि यदि हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारी गट को इन्फ्लेम करता है ना। तो इनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा इशू है कि एक ग्रुप ये कहता है कि हम कोई भी मिल्क, जैसे भैंस का मिल्क लेते हैं, काउ मिल्क लेते हैं, तो वो हमारे गट को इन्फ्लेम करता है। ओके, this is a very serious issue and this has been raised by various researchers। बहुत रिसर्चर्स ने इसको रेज किया है कि हमें एनिमल जो प्रोटीन है, क्योंकि मिल्क भी एक एनिमल प्रोटीन है, ओके, और वो हमारी गट को इन्फ्लेम करेगा। तो एक थ्योरी जो इनकी ये कहने की है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक हद के बाद हमारे शरीर को मिल्क की जरूरत नहीं होती। ओके, हमारे शरीर को मिल्क की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एनिमल प्रोटीन हमारे गट को इन्फ्लेम कर सकता है, उसको एलर्जी कर सकता है, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता। ओके, ये उन्हीं लोगों में होता है जिनको उस पर्टिकुलर प्रोटीन से एलर्जी, जैसे कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ओके, क्योंकि एक जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है वो मिल्क में होता है, तो वो लोग मिल्क नहीं पी डाइजेस्ट कर सकते। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो उस मिल्क प्रोटीन को या मिल्क लैक्टोज को टॉलरेट ना कर पाए। ओके, लेकिन यहाँ कैमल मिल्क हम जो यूज कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ओके, और 200 ml, जैसे डॉक्टर तायरा ने भी कहा कि हम कितना 1 लीटर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 200 ml हम कैमल मिल्क ले सकते हैं, या उसका जो पाउडर फॉर्म आता है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी ब्लड शुगर को कम करती है। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है कि 200 जो कैमल मिल्क है वो बेसिकली हमारा 8 से 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन के तरह। ओके, इंसुलिन नहीं है, वो इंसुलिन लाइक प्रोटीन है। ओके, तो वो पैरेलली जो है हमारे ब्लड शुगर को कम करेगा, और हमारा जो इंडोजीनियस सिक्रीशन है इंसुलिन का, ओके, और जो ब्लड टाइटर है उसका, वो अपने आप कम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैमल मिल्क लेंगे तो उनका मोटापा भी या विसरल एडिपोसिटी जो है शरीर में, वो भी हमारी डिक्रीज होगी। यस डॉक्टर। या थँक्यू उन्मेश जी, तुम्हाला मिळाली का तुमच्या प्रश्नाची उत्तर? हो सर, मला मिळाली, पण मला अजून खूप सारे प्रश्न आहेत, मी नंतर ते डिटेल मध्ये तुमच्याशी बोलेल त्याविषयी। चालतं मग चालतं आपण सरांना नंतर कन्वे करू। ओके ओके, चालतं 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 ठीक आहे. थँक्यू उन्मेश जी, स्टार्टअप करून दिल्याबद्दल. दुसरे आपल्याकडे अरुण हराळे आहेत मुंबईवरून, ते पण काही विचारू इच्छितात. अरुण हराळेजी, आपला माईक अनम्यूट करा आणि विचारा. Yeah, good evening, Dr. Prashant sir and Dr. Jain sir. You both are doing good job, and the mission non-diabetic in India, that is a very good mission you guys have started, and we are the part of that mission, and we are very much happy on that.
My question is that yes, Dr. Jain has covered that lactose intolerance person can take that camel milk first. Second, is it available in India? Or third, can I take that milk powder if it is available in India? Okay. Yes, Tyra. Yes. I think Tyra will give answer to this question. Yes. Okay, okay, okay. Okay. Can I say, or Dr. Rajesh? Yes, yes, sure, sure. Okay. My first question. Yes, actually, camel milk digests easily by lactose intolerance cases. There are many mechanisms, but I don't want to take time here and explain about what mechanisms, how this camel milk is digestible, more digestible for lactose intolerance cases. And usually it's used for these cases due to some enzyme. This enzyme in camel milk, it's because of some bacteria, lactic acid bacteria in camel milk, and this bacteria produce some enzyme, and this enzyme ferment lactose. That's why lactose intolerance cases don't have any problem, because their lactose will be digested by this enzyme in camel milk. So they can use, it's very good, very proper milk for lactose intolerance cases. And another question, yes, it's available. I know it's available in India, especially we have very good quality brand in Rajasthan. Adavik Food produce camel milk powder, and I know their quality, I know their precision, I know their processing way, how they process, they make this powder. And I know this powder is has good quality. Even Dr. Rajesh, I think, used this powder, and he knows well. But the issue is it's different with raw camel milk or fresh camel milk or camel milk in liquid form, because due to this processing way, some of this insulin-like protein and the other bioactive components like lactoferrin, as Dr. Rajesh said, and the others like immunoglobulins and the other components will be destroyed by this processing. But still it has insulin-like protein and the other components. If that factory used freeze drying method for making powder, it will be more better. It's better than spray drying for making powder. I know in India, this company, this factory, they produce very high quality powder. And in other countries also it's available in powder form, but I think if you are in India, you can apply and you can order this powder from, I think they have some office in Delhi also, and they are located in Rajasthan. As you know, the camels in India, they are in Rajasthan area, and their milk is natural milk, very natural milk. I have some connection with these people, farmers, camel farmers in Rajasthan. Believe me, I could not convince them to give some other foods to their camel. They only graze, they only take their camels to some area, and these camels only eat natural food, like some herbs, some trees, the leaves of some trees, and they don't give the other things. So their milk is naturally medicinal milk. I confirm it.
I could not convince them. Please give the other things to your camels. If you give, the milk of your camels will be increased up to 7 liters per day, but they never accept. So their camels just eat natural things like leaves and the other things. So I think these two questions. Not more question, yes. Okay. So I think I Arunji. see some. Yeah, I see some other questions here. I can explain. Yes, you can explain, because if Yeah. you are there are some questions posted by Dr. Purvain as well as Mr. Padmakar, Dr. Padmakar Prabhune from Pune, Preeti Surve as well as Aditi Kulkarni. You can answer them. Okay, because the time, as I said, my place is not proper. Maybe sometimes there's some noise, and if I explain and it finished my turn, it will be more better. Thank you. Yes. I see one question here. For one question, I don't know what it means. Any substitute for camel milk? Yes, you can use powder. It's available. And yes, for it's going to get digest. Camel milk must be with high protein. No, camel milk, its protein is same to cow milk, but the quality of the protein quality of camel milk is different. I mean, the structure and it doesn't have high protein. It's almost same to cow milk. Is camel milk suitable for lactose intolerance cases? Yes. Camel milk is acid or alkaline, causes only the it's acidic. Camel milk is acidic. Its pH is less than cow milk, and the other, I think it's finished. The question, all question about camel milk finished. I don't see the more things. Yes. Okay. One question asked by Dr. Purvain. Does your research findings indicate that daily consumption of camel, how much ml per day camel milk is given? Yes. Regarding to diabetes, there are, I said there are many studies and researchers. Most of them use half liter daily, once at morning and once at the afternoon, before meal or after meal. No difference. And but should not use by high amount. I mean, should not take whole half liter once. You can start by 100 milliliter and then increase after some days 200 milliliter, 300, and then up to a half liter, 500 milliliter. Okay, and regarding type 1, type 2 diabetes, what is the time frame there? Yeah, it's effective on both diabetes, type 1 and 2. And it not mean we don't use insulin injection. Yeah, it's therapy. It's adjunctive treatment. It can be helpful, and it only produce or about 30% of insulin. It reduce camel milk half liter daily. Using camel milk half liter daily reduce required insulin doses about 30%. It means those people, they use insulin, they should have the usual caring like insulin injection, their diet, and also other important thing, and use camel milk. Use camel milk instead of cow milk and the other milks. Okay.
Yes, most of the questions I think Professor Taira has been answered. बहुत सारे questions जो पूछे थे, I think everyone got answers. So मैं अभी डॉक्टर राजेश जैन सर से गुजारिश करूंगा कि वो हिंदी में अभी जो भी है क्वेश्चंस है यहाँ पर उनका जो सार है, क्योंकि तायरा मैडम बोल रही थी कि डॉक्टर राजेश जैन सर ऑलरेडी यूज दिस कैमल मिल्क इन हिज सम पेशेंट्स. So Dr. Rajesh Jain sir is the right person also to answer lots of questions and Dr. Rajesh Jain sir, please tell us regarding which brand to use, also whether to use in capsule form, powder form or tablet form, camel milk, and how much camel milk, type 1 or type 2 diabetes to take, and for how much duration to take. Thank you, Dr. Prashant. Yes, there are very good questions. And as we already know that राजस्थान में ही यहाँ पर कैमल होते हैं, और राजस्थान में भी जो है वो छोटी पत्तियां अपने कैमल्स को नहीं खिला पाते हमारे जो फार्मर्स हैं वहाँ पर. तो जैसा डॉक्टर तायरा ने कहा है कि जो कैमल को यदि डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी पत्तियां दी जाएं तो उससे उनका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. ओके, तो राजस्थान की एक कंपनी है एडविक, AADVIK, एडविक. ओके, तो आप गूगल में एडविक करके टाइप करेंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, और डॉक्टर तायरा ने भी इसको हमें सजेस्ट किया था. और इसके जो पाउडर को इवन आई माई सेल्फ हैज कंज्यूम विद माई फ्यू पेशेंट्स, और उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. और जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि 30% इंसुलिन डोजेस जो हैं वो हम अपने पेशेंट्स की कम कर सकते हैं. ओके, और सेकंड चीज ये है कि ये एक सुपर फूड है. ओके, इफ समबडी डोंट हैव डायबिटीज इवन दे कैन टेक. जैसा कि डॉक्टर तायरा ने कहा है कि उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं. ओके, उसमें वायरस को लड़ने की इम्यूनिटी जो होती है वो इसमें मिल्क में होती है. वायरस पार्टिकल्स को ये अनगल्फ कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर तायरा ने की है कि यदि ये मिल्क रॉ फॉर्म में लिया जाए तो सबसे बेस्ट है. ओके, और जो पाउडर की बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि हमारे देश में हर जगह कैमल नहीं है. ओके, तो रॉ कैमल मिल्क नहीं मिल पाता. ओके, तो ये जो कंपनी है ये इस कैमल मिल्क को बहुत माइनस टेम्परेचर पे रख के इसका पाउडर बनाती है. ओके, और ये फ्रिज के डोर पे रखना चाहिए. तो ये ठंडे में रहेगा इसका पाउडर, तभी इसके प्रोटीन की जो वैल्यू है वो है, क्योंकि इसका प्रोटीन बड़ा सेंसिटिव होता है. थोड़ा सा भी हीट होगा तो वो प्रोटीन इसका खराब हो जाएगा. ओके, तो ये एक बहुत ही हल्का प्रोटीन है इसका. जैसा कि हमें पता है कि वे प्रोटीन एक होता है दूध में जिसके पाउडर्स बनते हैं, बहुत तरह की चीजें बनती हैं, वो बहुत डाइजेस्टेबल होता है. ओके, तो ऐसे ही इसमें जो प्रोटीन है वो बहुत ही सेंसिटिव प्रोटीन. ओके, और वो प्रोटीन हमारा सिर्फ डायबिटीज नहीं, इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जनरल इम्यूनिटी, गट का जो माइक्रोबायोटा है उसके लिए भी ये बहुत हेल्दी. हमारे माइक्रोबायोटा को बिल्कुल चेंज कर देता है कैमल मिल्क. ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आयरन हाईएस्ट है. जितने भी मिल्क हैं आज तक उसमें सबसे ज्यादा आयरन है वो कैमल मिल्क में पाया जाता है. ओके, तो बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कहने का मतलब मेरा है कि हम पाउडर के फॉर्म में इसको ले सकते हैं. ओके, और हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जो है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो एडविक करके जो कंपनी है इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये हमें कोरियर से ये हमें भेज सकती है. ओके, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो कैमल मिल्क का जो यूरिन पे भी पेपर आए हैं काफी. ओके, तो कैमल मिल्क का यूरिन एक सिर्फ ऐसा यूरिन है
जो डाइऑक्सिन्स, जो पॉल्यूशन हमारे पेट में पहुंचता है, वो उसको खत्म कर सकता है। ओके, यदि हम 3 एप्पल खाएं तब जाके 50% डाइऑक्सिन्स हमारे गट से डिटॉक्सिफाई होते हैं। ओके, लेकिन कैमल यूरिन पे जो पेपर आया है रिसेंटली, वो 100% पॉल्यूटेंट जो हमें खाने पीने के पदार्थों से मिलते हैं, वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो आज हम लोग बहुत यूरिन पे नहीं बात करेंगे, आज हम कैमल मिल्क पे ही कंसंट्रेशन है। तो इट्स ए गुड मिल्क, एंड जो क्वालिटी है इसकी वो हाईएस्ट है बेसिकली। ओके, यस डॉक्टर प्रशांत। Yeah, I think lots of questions we answered, and Advik Food Company produces high quality powder, and both Professor Taira as well as Dr. Rajesh Jain sir, they used, and Dr. Rajesh Jain sir is used for himself also. Yes. And I also just for first time I am hearing this camel milk. आई एम नॉट अवेयर गाइज, मुझे पता नहीं है कैमल मिल्क और डायबिटीज, लेकिन पहले मैं डॉक्टर राजेश जैन सर से ही सुना था, लेकिन that is a good concept. But my question, there is my question also, basic question I would like to ask. Because there is means lots of people, because people have very not high level questions, they have common questions in their mind, so I would like to represent them, मैं उनको represent करना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टर राजेश जैन सर हम लोगों को बोलते हैं कि दूध मत लो, अगर आपको डायबिटीज अच्छा कंट्रोल करना है तो काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क डोंट कंज्यूम इट, राइट? सो if we are asking them to consume at least 200 ml of this cow milk per day, or whatever dose that we recommend, as a adjuvant therapy for our diabetes, that will be helpful for the good outcome of our diabetes. So ये हमारा जो ये है कंट्रोवर्सी है, ये इसको कैसे हम कॉमन पीपल को बताएंगे? यस, एक्चुअली देखिए क्या है कि हम मिल्क की क्वालिटी पे यदि वर्कआउट करें तो सबसे पहले तो एडल्ट को मिल्क की जरूरत नहीं है। ओके, तो बफेलो मिल्क ओके जो है वो सबसे वर्स्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी में आया काऊ मिल्क, ओके जो बेटर है उससे। इससे बेटर जो है वो है गॉट मिल्क, ओके, और इससे बेटर हो गया हमारा कैमल मिल्क। तो ये 4 कैटेगरी के मिल्क हो गए हमारे। ओके, तो हमारी मेडिसिनल वैल्यू जो है मिल्क की वो इस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। ओके, तो गॉट मिल्क की क्वालिटी डेफिनेटली मच बेटर है। ओके, इसके ऊपर कैमल मिल्क आएगा। ओके, और जो हमारा बफेलो मिल्क है दैट शुड नॉट बी कंज्यूम बिकॉज उसमें फैट भी बहुत ज्यादा है। ओके, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा जा रहा है उसमें हमारे शरीर में, तो कहीं ना कहीं हमारा वजन बढ़ा रहा है। ओके, और काऊ मिल्क, गॉट मिल्क और कैमल मिल्क, ओके, तो इसको हम स्मॉल अमाउंट में ले सकते हैं। कहने का मतलब मैसेज इज दिस, ओके, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनर्जी के कारण बफेलो मिल्क शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। ओके, और मेडिसिन वैल्यू जो हमने बताई है ये 3 मिल्क की है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, गॉट मिल्क, काऊ मिल्क एंड द कैमल मिल्क। सो ये 3 तरह के मिल्क को हम अपना रखेंगे। और इवन सोया मिल्क भी जो है बेसिकली उसकी भी क्वालिटी अच्छी है एज फार एज प्रोटीन इज कंसर्न, क्योंकि सोया प्रोटीन जो है वो बेसिकली जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या बहुत तरह के मिल्क से एलर्जी है तो वो सोया मिल्क अपना ले सकते हैं, बट इन द स्मॉल क्वांटिटी। राइट, सो thank you for clearing, Dr. Rajesh Jain sir. Very nice explanation. So Professor Taira and Dr. Rajesh Jain sir answered lots of questions
regarding this camel milk and other types of milk, and camel milk as a superfood, as well as how this camel milk is available, and what is the role of adjuvant therapy in diabetes. Because जैसे कि ये डायबिटीज का जो थीम है, डायबिटीज द मीन्स हमारा जो इस साल का जो ये मीन्स इस डायबिटीज डे का जो थीम है, डायबिटीज एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। सो इस थीम को लेकर आज हमने यह टॉपिक जो है आपके सामने लाया है। और डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरा जो है, she is already doing research on this camel milk and effect of this camel milk on diabetes, and that's why we brought her to this Zoom live. And she is also expert in other herbal medicines also. So I would like to ask final question to Professor Dr. Tahira. So I think there are no more questions in comment box. So Professor Dr. Tahira, except camel milk, in your opinion, so what is the effect of other herbal medications on diabetes, or which you are studying? Yes. Regarding to diabetes, there are many herbs which are effective on diabetes, and actually I think some of them I don't know the name in English, but because we use in traditional Iranian medicine, and I know the Persian name because we use here it's common using some herbs for diabetes. One of them the name in English I really don't know, but we use 2, 3 or 4 herbs for diabetes, but maybe these are local herbs, maybe just available in my country or my area. I really don't know you in India you have them or not, but some other herbs, some common herbs which are available globally. One of them is cinnamon. I think cinnamon is available there because when we buy cinnamon, they say, I mean that shopping tell us this is from India. So because they say it's from India, so we buy. We know it has good quality, it's very good one. So cinnamon we recommend for diabetic patients about 1 to 4 gram daily. And in some studies it's interesting because a few days before I wrote one article on cinnamon for heart health and diabetes. So I will publish it in Dr. Rajesh Jain website very soon. In many studies, many clinical studies, it's confirmed that cinnamon used about 1 to 4 or 5 until up to 6 gram daily for diabetic patients, and it decrease or improve the complications of diabetes, like the other, I mean, it improve their general status, and also it improved the other complication, other risk factor of diabetes, like cardiovascular issues and the others. And another one which we use, I think it's available also in India, it's a ginger. I think you have it also, and turmeric and saffron, but we have the best quality of saffron in Iran. I don't know you have or not saffron, but most clinical trial, most researchers are on cinnamon. Ginger also is important.
The other herbs, I don't know the name in English to tell you, but we have 3 ones. I can later I can send for you this name, and you can put in everywhere, and the people they can see, because one of them is very, very effective, and we use it really. I don't know the name even in English, because these are local herbs. And also licorice, Licorice. you know. Yes, Yeah. licorice. Licorice here, it's used for stomach ulcers. And it's very it's really helpful for this issue. But it's used for diabetes also, and some other herbs. I don't know the names, but the names I mean in English, I really don't know. I don't remember. I know, but I don't remember the name in English. I will send you later. You can send for people. And if we have time, I check now and tell you. If not, Yeah. I think the better way is you just write an article on this and publish it okay, on Dr. okay, Jain sir's okay. website. Okay, I So will Dr. write. Jain sir will convey us that article. So I will Okay. message each and everyone, those who are present inside this Zoom room. So that will be better idea. Yes. So Okay. if we Okay. have names of all the other herbal supplements that you recommend and that you are studying Yes. on diabetes, and Yes. that Yes. we can include, if we that include in small quantity in our day-to-day Yes. life. So how these are going to affect our diabetes outcome. So that will be very, very useful for all of us. Yes. Okay. So I think it's more than 1 hour that we are doing this Zoom presentation, and I think this is a very new and very exciting topic that we discussed. आज का जो टॉपिक है एकदम नया था, एकदम एक्साइटिंग था. कैमल मिल्क और डायबिटीज किसी ने अभी तक नहीं सुना होगा. आई थिंक जितने भी आज इस जूम रूम में थे, कैमल मिल्क और डायबिटीज के बारे में मुझे भी नहीं पता था. आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दिस कैमल मिल्क एंड डायबिटीज. And previously I used to take lots of milk products, buffalo milk products or cow milk products, but since last few years, I think after I came in contact with Dr. Rajesh Jain sir, I reduced this animal milk, specifically buffalo and cow milk, aggressively in dietary protocol. In small quantities I am taking, but very, very small quantities, but that has a very good impact on my diabetes outcome. And along with that, I am regularly using other herbal remedies that are very, very useful for diabetes. Whatever Professor Dr. Taira told, like cinnamon, for near about 1 year I used. My daily morning protocol was that 1 glass of lukewarm water. In that I used to drop 1 pinch of good quality cinnamon that I brought from Kerala, and I used to drink that water. I think selenium is one of the mineral that is present in that cinnamon, and that is very, very beneficial for diabetics. That I know, and due to that reason I used to take regularly that cinnamon, and other lots of herbs Professor Dr. Taira told. So I would like to request her that please write all English names, write one small article and publish it on Dr. Jain sir's website, so that we will come to know, all of us we will come to know, हम सभी को पता चल जाएगा जो भी वो बात कर रही है, जिन हर्बल सप्लीमेंट्स की बात कर रही है, उनके नाम हमें पता चल जाएंगे.
So I think there are no more questions from all our participants, because our participants are also very good listeners and they are very curious, and lots of participants, they ask very good questions. I can see lots of good questions from Dr. Puven. She joined from Australia. Thank you, Dr. Puven. I can see questions from Dr. Padmakar Prabhune sir, Aditi Kulkarni madam from Mumbai, then Preeti Surve madam, then there are lots of good questions from Arun Harare sir, also Unmesh Patil sir. Thank you all of you guys, those who ask questions, as well as those who are present inside this Zoom room, as well as those who are watching us live on our Health Square YouTube channel. This is telecasted on Health Square YouTube channel, and you can watch replay also, and you can recommend this replay also to all your friends, those who are living with diabetes and those who want to know more about this diabetes, and if they want more education regarding this other remedies in diabetes. So I would like to thank our special guest, Professor Dr. Tahira ma'am. She specially joined to our Zoom room. And I would from all of us, I would like to thank her from the bottom of my heart. Thank you, Professor Dr. Tahira, for giving your valuable time to us. Thank you. I'm also thankful to you and Dr. Rajesh and the other participants. Really, it was very nice time to spend with you, and I also learned many things here, and I'm ready at any time to answer the questions. If you have any question, you can give my email to people, no problem. I'm ready at any time. Thank you. Yeah, definitely. Thank you, ma'am. I would also like to thank our mentor, Dr. Rajesh Jain sir, and he's the inspiration from behind all activities that we are doing. Really very humble person, and very every time good amount of knowledge he gives his 200% every time. He educate all of us. He brings all of us on the right path. हमें वो एकदम हमारा डायबिटीज जो है एकदम हमारे शरीर से कैसे गायब हो जाए और हम अच्छी जिंदगी जी सके, इसके लिए वो उनका 200% हमेशा देते हैं, और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है. सो थैंक यू डॉक्टर राजेश जैन सर. Thank you. And all of you, those who are present inside this Zoom room, thank you. And guys, share this live. Just go to our Health Square YouTube channel, and our mission is to transform health of 1 million people. 1 million लोगों का हमें हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना है, और ये मेरा काम नहीं है, डॉक्टर राजेश जैन सर का काम अकेले नहीं कर सकते, या प्रोफेसर डॉक्टर तहरा अकेले नहीं कर सकते. अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप जो सब लोग यहाँ पर मौजूद है, वो सब इसमें भागीदारी हिस्सा ले सकते हैं. इस मिशन में हम सब मिलकर काम कर सकते हैं. Thank you for all of you. Thank you. Bye. Thank you. Have a good night. Bye. Good night. Bye.